Hello students, a very welcome to all of you. Now today we are going to start with the new chapter that is nothing but complex number और ये first topic है paper 2 में. Please write down the heading first topic complex numbers paper 2. Now before we move on to the complex numbers, let us quickly recollect what type of numbers we have already learned till 10th standard. We are familiar about natural numbers, real numbers, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स ऑलरेडी हमें मालूम है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टाइप ऑफ नंबर दैट इज नथिंग बट complex number. Now this chapter complex number is going to play a very important role in entrance as well as in JEE exam also. ये बहुत ही important chapter है JEE point of view से. Now before moving on to the complex number, students, we already know how to find out root of positive numbers. Say for example, if I want to find out root of 100, so we all know root of 100 is nothing but equal to 10. If I want to find out root of 64, we all know root of 64 is nothing but equal to 8. But if I tell you, if I want to find out root of minus 49, then we have not learned any procedure to find out root of a negative number. 10th स्टैंडर्ड तक हमें ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं सिखाया जाता है जिससे हम रूट ऑफ नेगेटिव नंबर फाइंड कर सके. बट इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू लर्न how to find out root of a negative number also, and many new concepts also we are going to learn along with that. So let's get started with, before finding out root of negative number, students, we will have to define something. हमें एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा. So please start writing down along with me definition of imaginary यूनिट का डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, so write down under this heading imaginary unit. Write down imaginary unit is denoted by notation small I. इमेजिनरी यूनिट को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल आई इन ग्रीक लेटर इट इज कॉल्ड एज अयोटा. IOTA, अयोटा बोलते हैं हम इसको. दिस स्मॉल लेटर आई now onwards will be called as iota in the complex numbers, and it is defined as, I equal to under root of minus 1 with I square is equal to minus 1, and put a box over this. ठीक है, write down till here students. What is imaginary unit का definition? Imaginary unit is denoted by the notation I, which is also read as iota, Greek letter है, and it is defined as I equal to under root of minus 1 with I square equal to minus 1. Such a unit is called as an imaginary unit. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया हमारा imaginary unit का. Now next definition we are going to see, that is of imaginary number. देखो next definition of imaginary number. Write down a number of the form, ऐसा लिखो, a number of the form b into I. B into I means iota. A number of the form b into iota where b is not equal to 0 and b belongs to set of real numbers.
and I is equal to under root of -1, then such a number is called as imaginary number. Write down this definition, very important, students. What does this definition say? Imaginary number का definition क्या बोलता है student? That a number of the form b into iota where b is not equal to 0, b का value 0 नहीं होना चाहिए, b should be from set of real numbers and I is equal to under root of -1, then such a number is called as an imaginary number. ये जो number है ना b into iota, this number, this kind of number or this type of number is called as an imaginary number. Please write down this. Okay, now recollect in the beginning मैंने आपको बताया था we cannot find out root of a negative number, but after defining imaginary unit we can easily find out root of a negative number also. So let us take down some examples. Okay, so write down examples. Imaginary number के नीचे आप लिखो examples. Write down example number 1. अभी suppose मुझे find करना है under root of -49. Now please try to understand the procedure, students. So under root of -49 को हम कैसे लिखेंगे? Please have a look. So it will be written as under root of 49 into -1. -49 को हम ऐसा लिख सकते हैं. Now we know the property of root that if we are having root of a into b, so it can be written as root a into root b. ऐसा लिख सकते हैं हम. So according to that, this will be further written as under root of 49 into under root of -1. Now you observe ये positive number है. So root of 49 is nothing but equal to 7 and under root of -1. देखो कैसे define किया है student? Under root of -1 is defined as iota. This under root of -1 will become nothing but iota. So therefore students, under root of -49 is nothing but equal to 7 into iota. Right on. यही हमारा final answer है. So now onward students, we can find out root of a negative number also. Please make a note, then we'll take down one more example after this. So ये first example हो गया. Now अभी हम second example देखते हैं students. Now you'll observe over here यहाँ पे ये perfect square था, but it is not at all necessary कि जिस number का हम root find कर रहे हैं वो perfect होना चाहिए, perfect square होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Say for example, if I want to find out under root of -29, इसका root find करना है. So this will be written as what? Write down along with me. This will be written as root of 29 into -1, which can be further simplified and can be written as under root of 29 into under root of -1. ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. Now under root of 29 को हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो under root of 29 सेम रहेगा into under root of -1. So under root of -1 is nothing but equal to iota. So therefore students, what is the answer? Under root of -29 is equal to root 29 into iota. That's our final answer. तो अभी इसको हम जनरलाइज करते हैं. We have seen first two examples. Now let us generalize this. तो आप लिखो generalization. So what do we generalize students? Over here you can observe that under root of -49 था, तो उसको हमने root 49 into iota लिखा. Root 49 होता है 7 multiplied by iota. Under root of -29 we have written it as root 29 into iota. तो जनरलाइजेशन क्या होता है? देखो under root of -a
will be equal to root a into iota and put a box over this. तो जो भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, लाइक अंडर रूट ऑफ -29 को हमने कैसे लिखा, √29 into iota. So similarly, under root of -a will be written as √a into iota. Please write down. It's a very important point that we are going to require while solving the problems also. Please make a note. Then we'll move ahead. Okay, students. So I hope you must. Acha, now next definition we are going to move on to is nothing but complex numbers. तो ये मैं examples रब कर देता हूँ और ये जनरलाइजेशन वाला पार्ट आपके लिए वहां पे लिख देता हूँ. ओके, so just let me rub off this example. Next definition आप लिखो, we will see that of complex numbers. ये जो जनरलाइजेशन वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that अंडर रूट ऑफ इक्वल टू √a into iota. ये जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए. ओके, नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. राइट डाउन अ नंबर ऑफ द फॉर्म. चलो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसमें आप लिखो डाउन अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस iota b और iota b, कैसे भी आप उसको रीड करो. अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस iota b where a and b belongs to set of real numbers, where a and b belongs to set of real number and आगे लिखो I is equal to under root of -1 with I square equal to -1. Such a number is called as a complex number. Right on this. देखो डेफिनेशन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, a number that is of the form of what form, it is of the form a plus iota b or iota b where a and b belongs to set of real numbers and I is equal to under root of -1 with I square equal to -1. Such a number is called as an complex number. इस फॉर्म का होता है complex number. Okay, write down on the next line. इसके बाद लिख लो complex number is denoted by the notation. ऐसा लिखो, it is, आगे ऐसा लिखो, it is denoted by the notation z. z नोटेशन यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए. एंड हाउ इट इज रिटर्न एज z इज इक्वल टू a प्लस iota b. ऐसा लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस iota b. नाउ इन दिस स्टूडेंट z इज इक्वल टू a प्लस iota b, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो a होता है ना, दिस a इट इज कॉल्ड एज, ऐसा लिखो, a इज कॉल्ड एज, ऑन द नेक्स्ट लाइन लिख के देता हूँ मैं आपको. चलो पहले आपको समझा देता हूँ फिर लिख के देता हूँ. a is called as the real part of complex number and b is called as the imaginary part of the complex number. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर and another is called as the imaginary part of the complex number.
जिसमें आयोटा है, जिसके साथ आयोटा है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जिसमें आयोटा नहीं है, ए के साथ आयोटा नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे एरो डाल के भी आप लिख सकते हो, राइट ऑन दिस वे ओनली। ए के नीचे ऐसे एरो डालो और लिखो इट्स अ रियल पार्ट, और ऐसे बी के नीचे एरो डालो एंड राइट डाउन दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न दिस वे आल्सो, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई ब्रैकेट में जेड, and this is since it is imaginary part, it can be written as im bracket z, that is imaginary part of z। चलो राइट डाउन दिस वे ओनली, अलग से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। z is equal to a plus iota b में a is called as the real part of the complex number and b is called as the imaginary part of the complex number। notation wise it is written as real re ब्रैकेट में z, मतलब ये रियल पार्ट है z का, एंड im डॉट ब्रैकेट में z मीन्स इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द नोटेशन z and it is written as z is equal to a plus iota b। चलो प्लीज राइट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड। So now let's move ahead after this। Now students, इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि if a is equal to 0 what will happen, if b is equal to 0 what will happen, you know। तो चलो लिख लो, as a note you write down, don't worry I'll give you with the help of example मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनिशियली आई एम गोइंग स्लो बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो प्लीज राइट डाउन और नोट आफ्टर दिस, ऐसा देखो नोट, नोट में राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ a इज इक्वल टू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इफ a इज इक्वल टू 0, तो अगर a का वैल्यू 0 हो गया, देन व्हाट विल हैपन, राइट डाउन स्टूडेंट्स, देन z विल बी इक्वल टू, दिस विल बी रिटर्न एज, a के जगह पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस आइटा b, and 0 plus iota b will be nothing but only iota b remaining। ये फर्स्ट केस हो गया। मींस what he means to say, if a का वैल्यू is 0, now the real part is 0, then we are only left out with the imaginary part of the complex number। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, तो वी आर लेफ्ट आउट विद द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट इज कॉल्ड एज नथिंग बट, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं हम। ठीक, डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म b into i where b not equal to 0 and b belongs to r, such a number is called as an imaginary number। तो अगर सिर्फ आइटा भी रह जाएगा, then that number is purely called as an imaginary number। okay, write down, ये फर्स्ट केस हो गया, दिस इज केस नंबर 1। अभी केस नंबर 2 लिख लो, इफ वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में b का वैल्यू 0 हो गया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, so then z will be equal to, this will become a plus iota into 0, dot means into a, now iota into 0 will be 0, so this is nothing but equal to a। so what does the second case says, अगर b का वैल्यू 0 हो गया, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर b का वैल्यू 0 हो गया, तो ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, and we will be left out only with the real part of the complex number। a plus iota b complex number में अगर ये b का वैल्यू 0 हो गया, तो ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, and we will be only left out with the real part of the complex number। तो देखो z is equal to a बचेगा, means the number that we will be having will be a purely real number। So once again I repeat students, कि if a का वैल्यू is 0, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, तो the number that is left out is purely imaginary number।
if b का value is 0, then the number that is left out is purely a real number. अभी third case, अगर दोनों 0 हो गए, if a is also 0 and b is also 0, then what will happen? So write down students, then z will be equal to 0 plus iota into 0 मिलेगा, a का भी वैल्यू 0, b का भी वैल्यू 0, so this will be nothing but equal to 0 itself, and it is also called as zero complex number. इसको हम बोलते हैं zero complex number, जिसमें दोनों रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है. So then such a number is called as an zero complex number. Okay, please write down these three cases. ये अलग अलग cases है. Write down, then we'll move ahead. So I hope students you must have written this. Now let us see some examples of complex numbers. So write down next one, next part लिखिए आप, example. Now please pay attention, let me explain, then you can write down the examples also. Now if you observe 2 plus 3 iota, this is example number 1. ठीक है, चलो मैं ऐसा नंबर कर देता हूँ इसको. फर्स्ट एग्जांपल इज 2 plus 3 iota, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखो, अ नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म a plus iota b. नाउ प्लीज रिमेंबर इट कैन बी रिटन एज a plus iota b, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a plus b iota भी लिख सकते हैं. आइदर ऑफ द वे इट कैन बी रिटन. iota into b लिखो या b into iota लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए आप, 2 plus 3 iota, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. सेकंड एग्जांपल इफ वी सी √5 minus √2 iota, दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, डेफिनेशन देखते जाओ आप. डेफिनेशन क्या बोलता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b belongs to set of real numbers. ये जो a और b नंबर है, they are from set of real numbers and with I is equal to under root of -1 with I square equal to -1, such a number is called as an complex number. तो ये सारे complex number के examples है. You can start writing them along with me now. अभी third example, say for example -6 iota, will this be called as a complex number? This is actually an imaginary number. What is imaginary number, students? A number of the form b into iota. Such a number is called as an imaginary number. But every imaginary number can be written or can be expressed in form of a complex number. तो ये जो -6 iota है ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. Why? Write down. So -6 iota will be written as 0 -6 iota. देखो, see case number 1. Case number 1 says what, students? That if a plus iota b is a complex number, a plus iota b is a complex number, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, तो जो नंबर बचेगा that will be iota b, that will be a purely imaginary number. समझने की कोशिश करो फिर लिखना आप. ठीक है, तो इसमें आप देखो -6 iota can be written as 0 -6 iota. तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज 0, that is why the number that we are getting is called as an imaginary number. Every imaginary number can be written or can be expressed in form of a complex number. लिख लो आप ये थर्ड एग्जांपल. उसके बाद हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4. थर्ड एग्जांपल हो गया. Now write down example number 4, students. Say for example, let us write down only number 10. Now this number 10, obviously you know that this is nothing but a real number. ये real number है. Now this real number can be also written or can be expressed in form of a complex number. कैसे लिखो?
So 10 will be written as nothing but 10 plus 0 into iota. Why? See, once again, come back over here. Case number 2 देखो. If b का value is equal to 0, then z is equal to what will be left out? A plus iota 0. तो ये a हो जाएगा. Obviously देखो, अगर b का value 0 हो गया, okay, I'll show you once again from here only. अब देखो, अगर b का value 0 हो गया, तो the number that we are left out, which is only a ना, सिर्फ a बचेगा. And a is nothing but the real part of the complex number बोलते हैं हम उसको. तो देखो, यहाँ पे 10 में it is nothing but what? 10 plus 0 iota. तो इसमें जो b का value है, b का value is nothing but 0. So what we have to remember, students, that now onwards, every real number can be expressed or can be written in form of a complex number. Every real number can be written or can be expressed in form of a complex number. तो अभी इसके बाद हमें नई चीज क्या सीखने को मिलती है? Now you know we have done sets. The biggest set of numbers, which was the biggest set of numbers in till 10th standard, it was the real number. Now real number से जो set of numbers बड़ा है, that is nothing but complex numbers. Why? Because every real number can be expressed or can be written in form of a complex number. ऐसा लिख लो आपके रेफरेंस के लिए. Every real number, if you want, write down. Every real number can be expressed in form of a complex number. So now onwards, अगर कोई भी आपको पूछेगा which is the biggest set of numbers, so your biggest set of numbers is nothing but complex number. Real number से जो बड़ा set है, real number was the biggest set of numbers. उसमें सब आ जाता है. रियल नंबर्स में रैशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सब आ जाता है अंडर रियल नंबर. बट रियल नंबर से जो बड़ा वाला सेट है, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस every real number can be expressed in form of a complex number. Please note down. तो देखो हमने different examples देखे complex numbers के. 2 plus 3 iota, √3 minus √5 minus √2 iota, minus 6 iota can be written as 0 minus 6 iota. Real number 10 can be written as 10 plus 0 iota. ठीक है ना? So please write down. This is a very important concept. So I hope students you must have written this. Now last thing that I will give you, I'll just rub this off. ये जो every real number वाला part है, इसको मैं rub कर देता हूँ because मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए. ठीक है? तो चलो write down after this. Write down set of complex numbers. Write down set of complex numbers is denoted by notation capital C. ऐसा देखो, set of complex number is denoted by the notation capital C. And it is given as ऐसा लिखो, C is equal to set of, curly bracket open करो, set of all the numbers which are of the form a plus iota b such that a and b belongs to set of real numbers and I equal to under root of -1. Write on this. A set of complex number is denoted by the notation capital C.
So C is equal to curly bracket में it is set of all the numbers of the form a plus iota b. It is of the form a plus iota b such that a and b belongs to set of real numbers and I is equal to under root of -1. बट इसमें अंडरस्टूड है विथ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो होता ही है, इसमें ये अंडरस्टूड है, चाहिए तो लिख लो विथ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 जहां पे भी आता है वहां पे ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता ही है. एंड देन द कर्ली ब्रैकेट क्लोजेस. आई होप इट इज विजिबल. थोड़ा ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ. दिस कर्ली ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर. ठीक है, राइट डाउन. चलो we have seen all the definitions, students. We repeat what all definitions we have seen today. First of all, we have seen imaginary unit. So what is an imaginary unit, students? So the imaginary unit is denoted by the notation iota, small letter I, and it is defined as I equal to under root of -1 with I square is equal to -1. आगे जब हम problems solve करेंगे. Okay. The next definition we have seen imaginary number. So क्या definition है students imaginary number का? That a number of the form b into iota where b is not equal to 0 and b belongs to set of real numbers and I equal to under root of -1, then such a number is called as an imaginary number. उसके examples देखे हमने imaginary number के. With the generalization, ये generalization वाला part important है, ये आपको याद रखना है. That under root of -a is nothing but equal to root a into iota. ये generalization वाला part is very important for us. ठीक है, next definition हमने देखा student, that is of complex numbers. जो topic है उसका definition देखा. So what is a complex number, students? A number of the form a plus iota into b. Or it can be written as a plus b into iota also, where a and b belongs to numbers and I equal to under root of -1 with I square equal to -1. Such a number is called as an complex number. Okay, complex number, it is denoted by the notation z. Z notation use करते हैं complex numbers के लिए, and it is given by z is equal to a plus iota b. ठीक है. Now in this, what is important to understand, students, that a is called as the real part of the complex number. A is called as the real part of the complex number and b is called as the imaginary part of the complex number. So real z एक complex number है, so real part of z is a and imaginary part of z is nothing but b. ऐसा होता है वो. Then we have seen three different cases a plus iota b में. What we have seen, see case number 1, my pointer. ठीक है, if a is equal to 0, then what will become? Z will be equal to, अगर a का value 0 हो गया तो z will be equal to 0 plus iota b, so will be left out only with iota b. So such a number is called as an imaginary number जहाँ पे iota b बचता है. If b is equal to 0, अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो z is equal to a बचेगा. So such a number is called as in purely a real number. Z is equal to a, purely real. This is purely imaginary, this is purely real. और अगर a और b दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो it becomes z is equal to 0. So it is called as a zero complex number हम बोलते हैं. Then we have seen examples of complex numbers randomly. Okay. And then what we have learned new now कि real number से जो set बड़ा है that is nothing but set of complex number and set of complex number is denoted by the notation capital C and it is written in this manner. Okay, very important. Please note down this first of all. Okay students, so write down next definition, that is of conjugate of a complex number. Conjugate of a
complex number. Under this definition, write down. Please write down along with me. Conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b. Conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b is defined as a minus iota b, and it is denoted by z bar. ये नोटेशन है, लिख लो. So what is conjugate of a complex number, students? Conjugate of a complex number. Now we know what is complex number. Z is equal to a plus iota b is the form of a complex number. So the conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b is defined as a minus iota b, and conjugate of the complex number, it is denoted by the notation z bar. Now you can say they are complex conjugates of each other. A plus iota b का complex conjugate is a minus iota b, vice versa way a minus iota b का complex conjugate is a plus iota b. एक चीज हमें याद रखनी है, when we are finding out the conjugate of the complex number, इसका जो imaginary part है ना, किसी भी complex number का जो imaginary part है वो sign में change होता है. Plus will become minus and minus will become plus. देखो ये imaginary part है, I into b, iota b, this is imaginary part. तो देखो plus का minus हो गया, vice versa में minus का plus हो जाएगा. So let us write down that as a note and then we'll take few examples also. लिख लो आप note. ऐसा लिखो, while finding the complex conjugate, while finding the complex conjugate, change the sign of imaginary part only. Change the sign of imaginary part only. Real part का sign change नहीं होता है, you know. A is the real part of the complex number and iota b is called as the imaginary part of the complex number होता है. So imaginary part का सिर्फ sign change हो जाएगा. Now let us take down few examples. तो एक table draw कर लेते हैं, write down examples. On one side we will write down some complex numbers and another side of equality we will write down their complex conjugates. So ऐसा आप table draw कर लो. Okay. Now please let me explain by taking down few examples, then write down the examples. अभी first example, say for example 2 plus 3 iota, this is the complex number. तो इसका complex conjugate क्या हो जाएगा students? So it will be 2 minus 3 iota. Why? See what does the definition says? A plus iota b अगर कोई complex number है तो उसका complex conjugate will be a minus iota b. Complex number में जो imaginary वाला part है सिर्फ उसका sign change होता है. तो which is imaginary part? 3 iota is the imaginary part. तो देखो plus का minus हो गया, 2 का sign same है, इसका sign change हो गया 3 iota का, plus का minus हो गया. Vice versa is also true. 2 minus 3 iota का complex conjugate will be 2 plus 3 iota. So they are complex conjugates of each other. ठीक है. चलो next example, let us check this. minus 6 minus 7 iota. इसका complex conjugate क्या होगा? So it will be minus 6 plus 7 iota. Only the imaginary part will change in the sign. ठीक है. Next third example देख लेते हैं. If I write down root 2 plus root 4 iota, root 4 तो चलो 2 हो जाएगा, root
2 प्लस √6 आयोटा लिख लेते हैं। तो √2 प्लस √6 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी व्हाट? √2 माइनस √6 आयोटा। Fourth example, suppose if I write down -9 iota, तो -9 iota का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इट विल बी +9 iota. Imaginary part है, in fact this is nothing but an what? It is nothing but an imaginary number, but it can be written as 0 minus 9 iota. तो -9 iota का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है that is nothing but +9 iota. ये प्लस साइन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ओनली यू कैन राइट डाउन 9 आयोटा. ओके, देन फिफ्थ एग्जांपल, सपोज इफ आई राइट डाउन 7. अब देखो 7 तो रियल नंबर है और साइन किसका चेंज होता है स्टूडेंट? साइन चेंजेस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो 7 इज गोइंग टू रिमेन 7 ओनली. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल टू बी रिमेम्बर्ड. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेफिनेशन बहुत ही इजी है. Only you have to change the imaginary part in sign. प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. Okay, please note down these examples. So with this definition, we have finished off all the important definition of complex numbers. Now let us move on to next part of the topic, that is nothing but algebra of complex numbers. ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ and write down next heading. If you are at the end of the page, you can take a new page. Just give me a minute. Next heading आप लिखो algebra of complex numbers. ठीक है, नाउ फॉर योर रेफरेंस स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, और इट कैन बी रिटर्न एज z इज इक्वल टू a प्लस b आइटा. आइदर ऑफ द फॉर्म, a प्लस आइटा इंटू b लिखो या a प्लस b इंटू आइटा लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. So for your reference, I have written the complex number over here. ठीक है. Now algebra of complex numbers में students, now we have to learn addition of complex number, subtraction of complex number, multiplication of complex number and division of complex number. चार चीजें सीखनी है. Now this is very basic thing and very important. So let us start with addition of complex number. अच्छा, before we start with addition of complex number, एक जरा आप heading लिख लो. Write down. Express the following. Write down. Express the following in form of a plus iota b. मतलब जो भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. अब जैसे एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है, जैसे हमें प्रॉब्लम्स में रिक्वायर्ड है, दैट सेम वे आई एम टेकिंग इट डाउन. ठीक है, तो राइट डाउन. फर्स्ट वन, लेट अस सी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ लेट अस टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. राइट डाउन. z1 equal to 2 plus 7 iota, and another complex number is I am taking z2 minus 3 plus 2 iota. I have taken two complex numbers z1 and z2. अभी हम सीखने वाले हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड कैसे करना है. तो जस्ट पे अटेंशन, यू कैन राइट डाउन लेटर ऑन. Therefore z1 plus z2 will be equal to, okay, now see what is z1 given students. z1 is 2 plus 7 iota plus what is z2 given. Acha, one more thing you can do, you can initially put up the brackets also. z1 है, अब z2 is nothing but minus 3 plus 2 iota.
अच्छा, जब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बी रिटर्न एज 2 plus 7 iota and this will be written as minus 3 plus 2 iota. ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. Now before I move ahead, let us quickly recollect z is equal to a plus iota b में complex number में there are two parts. A is called as, just for your reference I am revising, A is called as the real part of the complex number and B is called as the imaginary part of the complex number. देखो आप नोटबुक में मैंने अभी आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है. A को हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं एंड B को वी आर कॉलिंग इट एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, व्हेन वी आर कैरिंग आउट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है. Now you see which is the real part, 2 is the real part and minus 3 is the real part. And तो चलो पहले स्टेप वाइज ही लिखते हैं. राइट डाउन, दिस इज फर्दर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आप डालो 2 minus 3 real part with the real part, okay, and imaginary part with the imaginary part. What is imaginary part? plus 7i plus 2i, प्लस डाल के ब्रैकेट में आप लिखो 7i plus 2i. ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, यू कैन रीअरेंज डायरेक्टली. तो 2 minus 3, so that is nothing but minus 1 plus 7 iota plus 2 iota is nothing but 9 iota. Instead of reading it as I, we will read it as iota. So therefore ये किसका आंसर है स्टूडेंट? Z1 plus Z2 का. Okay, pay attention, I'll repeat once again. Z1 was the complex number 2 plus 7 iota. Z2 was the complex number minus 3 plus 2 iota. Now we are adding the two complex numbers Z1 and Z2. So Z1 is 2 plus 7 iota added with minus 3 plus 2 iota. So brackets हमने open कर लिए. Now what does the concept says for adding any two complex number? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है. तो सी दिस इज द रियल पार्ट, 2 रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, 2 इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड minus 3 इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखो 2 minus 3 रियल पार्ट के साथ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाएगा. तो 2 minus 3 minus 1 होता है, वी नो ऑल दिस थिंग, एंड 7 iota plus 2 iota is nothing but 9 iota. तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ऐड किया, we have got the answer as minus 1 plus 9 iota. Write down. It's very simple. Addition हो गया, खत्म. Now let us see an example of subtraction. ये addition हो गया. अभी आप लिखो subtraction of complex numbers. वापस दो एग्जाम्पल ले लेते हैं. Z1 is 5 minus 6 iota, ठीक है, एंड Z2 is minus 1 plus 4 iota. Let us take these two complex numbers. अभी हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. Okay, now these examples I am writing down on my own. टेक्स्ट में नहीं देख रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं देख रहा हूँ, मैं ये डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं खुद से. Okay, so therefore let us find out Z1 minus Z2. So student, write down what is Z1. Z1 is nothing but, bracket open करो, चलो, it is 5 minus 6 iota is Z1 minus Z2 is nothing but minus 1 plus 4 iota. अब वैसे हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, but I will not do it directly. We will open up the brackets and solve this. तो ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, this will open up with the help of minus sign. So write down what will this become? 5 minus 6 iota will remain same. अब जब ये सेकेंड वाला ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन होगा, so we have learnt in lower standards how to open up the bracket with the help of minus sign. So minus of minus, so it will become plus 1. Minus of plus is minus 4 iota. Write down. कुछ नहीं किया है, ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसको माइनस साइन से ओपन किया है. नाउ व्हाट डज द कंसेप्ट सेज? दैट रियल पार्ट इज टू बी रिटर्न विद द रियल पार्ट. तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? 5 एंड ये प्लस 1, ये रियल है,
So write down this will be further equal to, it's like adding only, bracket open करके जब हम solve कर रहे हैं तो it's like adding only. तो ये हो जाएगा 5 plus 1 written together into one bracket and the imaginary part together. So which is imaginary part? minus 6 iota minus 4 iota. तो लिख लो. अच्छा अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? You can put plus sign over here and then you can write down minus 6 iota and minus 4 iota inside the bracket. या ऐसा भी कर सकते हो. You can take minus sign common from both of them. You can do that way also. So students, this is further equal to what? Write down. Therefore, I'll just continue it over here. So therefore, Z1 minus Z2 is further equal to. What it further equals? So 5 plus 1, this is going to become 6 plus minus 6i minus 4i is nothing but minus 10i. And we have to express it in what form, students? We have to express the following in the form of a plus iota b ना. तो देखो हमने express कर दिया. This is in form of a plus iota b. We all know. Obviously इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. This can be further written as 6 minus 10 iota. ऐसा भी लिख सकते हैं. Z1 minus Z2 can be written this way also. But we have to express in what form? We have to express the following in the form of a plus iota b. बीच में plus sign होना चाहिए. See the first example. It was already of the form a plus iota b. तो इसमें कुछ भी changes नहीं किए. But अगर आपने पहले ऐसा लिख दिया, if you have written 6 minus 10 iota first, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. So since we want to express, both are correct. ये दोनों same चीज है. It is not different. 6 plus minus 10 into iota is same as nothing but 6 minus 10 iota. कैसे भी लिखो, but फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे. We have to express it in form of a plus iota b. Note down. तो दो चीजें हमने देखी. First we have seen addition and second we have seen subtraction of complex numbers. So ये addition and subtraction very important and at the same time it is very simple also. कुछ भी difficult नहीं. सिर्फ एक ही रूल हमें याद रखना है, whether we are adding or subtracting. Adding कर रहे हैं या subtracting कर रहे हैं, तो real part को real part के साथ add करना है and imaginary part को imaginary part के साथ add करना है. That is the rule. Okay, please note down. Then we'll move on to the multiplication. So now third part, let us move on to, that is nothing but multiplication of complex numbers. Now I am going very slow students because यही सारी चीजें हमें exercise में भी use करनी है. When we will start solving the problems में भी हमें addition, subtraction, multiplication ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. Okay, so just write down this heading, that is nothing but multiplication. Then we'll see the example dependent on it. So अभी आप लिख लो. First example, we'll take two examples in multiplication. So first one आप लिखो. Z1 is 2 plus 7 iota. Z1 दिया है and Z2 is minus 1 plus 3 iota. So now let us multiply these two complex numbers. Put it down. Therefore, Z1 into Z2. Now what is Z1 students? So लिखो 2 plus 7 iota. And what is Z2? So it is minus 1 plus 3 iota. Now you know that when we are multiplying, so multiply करते वक्त हमें brackets open करने पड़ते हैं. So we'll open up the brackets in this also. Put it down. This will be further written as. Now I will do stepwise. First example है तो bracket आप ऐसे भी open कर सकते हो और ऐसे भी open कर सकते हो. वो हमारे ऊपर है कैसे bracket open करना है. Let us open it in this manner. So write down. What will happen? 2 will be multiplied to minus 1 plus 3 iota, then plus 7 iota will be multiplied to the bracket minus 1 plus 3 iota. ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो 2 है, this 2 will be multiplied to this bracket and then this plus 7 iota will be multiplied to this bracket.
बट वी आर डूइंग स्टेप वाइज इनिशियली, हर एक स्टेप आपको शो कर रहा हूँ। अभी क्या हो जाएगा, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट, ये 2 ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, write down this will be further equal to 2 into -1 is -2 plus 2 into 3 iota is nothing but 6 iota, 2 into 3 iota is 6 iota और यहाँ पे प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे ये जो 7 iota है, so this 7 iota will be also multiplied to both the terms, so what will happen, plus 7 iota into -1 is -7 iota, देखो प्लस ऑफ माइनस इज -7 iota into 1, तो वो 7 iota मिलेगा हमें, ठीक है। प्लस ऑफ प्लस इज प्लस 7 iota into 3, तो 7 3s are 21, iota into iota is nothing but iota square हो जाएगा। So this is how we are going to multiply. Please write down till here. एकदम स्लो जा रहा हूं मैं, ठीक है। Now students, recollect, I have already given to you when we have defined an imaginary unit. Imaginary unit में क्या होता है students, I equal to under root of -1 with the value I square equal to -1. I square का जो वैल्यू है वो वैल्यू -1 होता है। Now why I am telling you so, because I square का वैल्यू मतलब iota square का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो write down this will be further equal to -2 remaining same। अच्छा, now one more thing can be done, ये दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, they are like terms, तो positive 6 iota minus 7 iota is nothing but -1 iota, चलो आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, -1 iota हो जाएगा, 6 minus 7 is -1, तो -1 iota प्लस 21 into iota स्क्वायर का वैल्यू इज -1, ये हमें याद रखना है। रीजन में लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, राइट डाउन, सिंस iota square is equal to -1। You can see in your notebook, जब मैंने imaginary unit define किया था, we have written I equal to under root of -1 with I square equal to -1, तो iota square का वैल्यू हमने -1 यहाँ पे डाल दिया, it is compulsory है। Now what will happen students, this will be further equal to -2 minus 1 into iota is iota itself and 21 into -1, तो ये -21 हो गया। Now what addition and subtraction ही करना है अभी आगे हमें। Now what it says, real part के साथ ऐड होगा, so what is going to happen, -2 minus 21 is nothing but -23 minus iota, ऐसा आ जाएगा। But we have to express it in form of a plus iota b, बीच में प्लस साइन होना चाहिए, so this will be written as what, -23 plus of minus iota, ऐसा लिख सकते हो, plus of -1 into iota, ऐसा, अच्छा चलो ठीक है, +1 into minus iota, write down this, -23 minus iota will be written as -23 plus of minus iota। इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -23 प्लस -1 into iota, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, we'll have to write down, express it in form of a plus iota b, and he may ask us to find out the value of a and b also, a और b का वैल्यू भी वो हमें पूछ सकता है, तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे we will go in that detail। अभी सिर्फ इतना याद रखो, what we have done, once again I see multiplication over here, z1 and z2 were the two complex number, so z1 into z2 मल्टीप्लाई करना है। Now z1 लिखा पहले, फिर z2 लिखा, then we are opening up the brackets, ठीक है। Now when we are opening up the brackets, तो you know bracket open करने के बाद हमें ये simplification मिला, ठीक है। Now 6 iota minus 7 iota, we have written it as -1 into iota, and यहाँ पे iota square का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया -1,
तो ये -21 हो गया. So -2 - 21 is -23, and then we have expressed it in form of a plus iota b. A plus iota b लिखो या a plus b iota लिखो, it is one and the same thing. So this is nothing but our final answer, and z1 into z2 का ये multiplication है. ठीक है. So now what we have to remember students कि addition and multiplication में आप कैसे भी करो, z1 plus z2, let me tell you in detail. z1 plus z2 is same as z2 plus z1. किसी भी ऑर्डर में आप उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. आप z1 plus z2 करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा, z2 plus z1 करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा. सेम इज इन मल्टीप्लीकेशन. आप z1 into z2 करो तो भी यही आंसर मिलेगा, z2 into z1 करो तो भी आंसर वही रहने वाला है. बट दैट इज नॉट द सेम इन सब्ट्रैक्शन. z1 minus z2 is not the same as z2 minus z1. सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो नहीं होता है. चलो, तो प्लीज नोट डाउन. So first is we have seen addition of the two complex numbers, then we have seen subtraction of the two complex numbers, and the third one we have seen multiplication of two complex numbers. अब multiplication में, this multiplication वाला part we will take one more example. Okay, but before that you note down till here. So let's take down second example under multiplication of complex numbers. Sorry, down. Second example में लिखो z1 is 2 plus 5 iota and z2 is 2 minus 5 iota. ठीक है. Now if you observe these two complex numbers very carefully, 2 plus 5 iota and 2 minus 5 iota, आपको याद आना चाहिए that these two complex numbers they are complex conjugates of each other. एक दूसरे के complex conjugates है. चलो let's multiply it down. Therefore z1 into z2. So what is z1 students? It is 2 plus 5 iota, and what is z2? It is 2 minus 5 iota. Now why I am taking complex conjugate का multiplication? Because यही चीज हमें जाके आगे division में काम आने वाली है. This is going to help us when we do division of complex numbers. That's why I'm taking down the second example. Now, जैसे first example में हमने brackets open किए थे, right? Now, in the second example also we can open up the brackets, but it is unnecessary waste of time. Observe, this is of the form a plus b into a minus b. Now, we all know that a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square होता है ना. तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो क्यों ब्रैकेट ओपन करके स्टेप्स इंक्रीज करने हैं? डू नॉट इंक्रीज द स्टेप्स. लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. So write down therefore z1 into z2. Dot means into, please remember. So what will happen? This is going to become 2 का square minus 5 iota the whole square. See the formula very carefully. मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स फॉर्मूला भी रॉन्ग अप्लाई करते हैं. a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square होता है. So we'll get this. So this will be further equal to what? So 2 का square is 4 minus 5 into iota का square. So 5 का square is 25 into iota square. ऐसा आ जाएगा हमें. ठीक है. Now what will happen students? I hope ये फॉर्मूला भी आपके रेफरेंस के लिए लिख लो साइड में. Write down the formula over here. चलो मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. Here we have used a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. Now we will substitute the value of iota square. तो देखो जरा नजर घुमाओ. Iota square का वैल्यू -1 है. I have given you in writing. Write down. This is further equal to. Now step wise लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए मैं. हाँ. So 4 remaining same -25 and iota square का value is -1. So minus of minus will become plus. So this is nothing but 4 plus 25. So answer is nothing but equal to 29. So ये answer है किसका? z1 into z2. But now since we want to express it in form of a plus iota b, heading देखो क्या दिया है? Express the following in the form of a plus iota b.
students, so therefore z1 plus z2 can be written as 29 plus 0 into iota. Why? We know that every real number can be expressed or can be written in form of a complex number. Please write down. A plus iota b के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है. Please make a note of this. तो हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट? What is important to understand in the second example, that whenever we are multiplying the complex conjugate, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज गेट अ रियल नंबर. ठीक है, आई विल गिव इन राइटिंग, डोंट वरी. राइट डाउन, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई, ऐसा देख लो आप, नोट आपके रेफरेंस के लिए लिख के देता हूँ. राइट डाउन नोट. whenever we multiply a complex number, whenever we multiply a complex number with its complex conjugate, we always get a real number. We always get a real number. देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगता होगा ये तो छोटी चीज है, ये क्या है, बट नोट डाउन, सारी चीजें हमें काम आने वाली है. बिकॉज एज आई सेड, दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर is very important from entrance and JEE point of view. 11th में तो important role play करेगा, ये एग्जाम में तो आएंगे क्वेश्चन, बट along with that ये जो टॉपिक है ये स्पेशली JEE मेंस और एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सारी डिटेल में आपको लिख के दे रहा हूँ. प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. विद दिस मल्टीप्लिकेशन इज ओवर. मल्टीप्लिकेशन में हमने दो एग्जांपल्स देख लिए. नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, the next thing that we are going to see is division of two complex numbers. तो उससे पहले ये सारी चीजें आप लिख लो आपके नोटबुक में. So now students, we are going to see division of two complex numbers. तो लिखिए fourth one, division. So let's take down one example. Because z1 is 2 plus 3 iota या iota and z2 is 1 plus 5 iota. z1 and z2, these are the two complex numbers, and now we are going to divide them. So लिखो, therefore z1 upon z2 is equal to, what is z1? So 2 plus 3 iota upon z2 is 1 plus 5 iota. Okay, now we have to remember students that when we are dividing two complex numbers, ठीक है, what is the procedure says वो important है अभी यहाँ पे. Now ये जो denominator है ना, what we are supposed to do, we are supposed to multiply and divide by the complex conjugate of the denominator. Denominator को we have to make it real. So to make the denominator real, we have to always multiply as well as divide by the complex conjugate of the denominator. ऐसा लिखो आपके रेफरेंस के लिए. इसके बाद multiply and divide by complex conjugate of the denominator. अभी क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं हर एक स्टेप आपको लिख के दे रहा हूँ. चलो राइट डाउन, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. Write down students, what will happen? Therefore z1 upon z2 will be equal to
2 plus 3 iota remaining same upon 1 plus 5 iota remaining same. Now recollect complex conjugate का definition. Complex conjugate क्या होता है? The imaginary part, उसका जो complex number का imaginary part है उसका sign change होता है. तो 1 plus 5 iota का complex conjugate is nothing but 1 minus 5 iota. तो 1 minus 5 iota से multiply किया and 1 minus 5 iota से divide किया. Now what we'll do, we will carry out the multiplication of these two complex numbers in the numerator and denominator is of the form a plus b into a minus b. अभी न्यूमरेटर में देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है. Now we have already seen multiplication of complex numbers. So चलो start multiplying these two complex numbers. So students, therefore Z1 upon Z2 will be equal to. अब सबसे पहले क्या होगा? तो first of all हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं न्यूमरेटर में. So this 2 will be multiplied to both the terms. तो चलो write down along with me. तो ये हो जाएगा 2 minus 10 iota. Then what will happen? Plus 3 iota will be also multiplied to both of them. दोनों को multiply हो जाएगा. So plus 3 iota into 1 is plus 3 iota. Plus of minus is minus. 3 into 5 is 15. Iota into iota is nothing but iota square. तो ये न्यूमरेटर में हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए. Now I have already told to you आप ब्रैकेट ऐसे भी ओपन कर सकते हो और ऐसे भी ओपन कर सकते हो. You can do either of the way. Now check denominator is of the form a plus b into a minus b. Multiplication में हमने दोनों केस लिए थे. What will the denominator become? It will become 1 square minus 5 iota the whole square हो जाएगा. Now let us simplify the numerator as well as the denominator students. तो देखो क्या मिलेगा? Therefore Z1 upon Z2 is equal to. Now this 2 remaining same. अभी आप देखो ये वाला जो टर्म है ना minus 10 iota plus 3 iota. So they are like terms. Like terms can be added and can be subtracted also. So minus 10 iota plus 3 iota is minus 7 iota minus 15 times of iota square का value is nothing but minus 1. आपके रेफरेंस के लिए वो भी वैल्यू डाल दिया मैंने. iota square का वैल्यू -1 होता है. ओके, डिनोमिनेटर में इट इज 1 minus 25 iota square. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी iota square का वैल्यू -1 हमें डालना है. Write down what will numerator become further? 2 minus 7 iota and this is plus 15 upon in the denominator this is nothing but 1 minus 25 into -1 iota square का वैल्यू है. अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ. रीजन आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर सिंस iota square is equal to -1. ये वैल्यू हमने पुट की है. So students, what will this become further? Now see the numerator. Real part can be added to the real part. So 2 plus 15 is 17 minus 10 iota upon 1. ये plus 25 आ जाएगा. तो 1 plus 25. So this is nothing but 26. So this is nothing but Z1 upon Z2. But we have to express it in form of a plus iota b. तो चलो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर उसके बाद a plus iota b के फॉर्म में भी आगे एक्सप्रेस कर लेंगे हम इसको. राइट डाउन टिल हियर. So now what we'll do students, इसको a plus iota b के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए we will split the denominator. Write down next step. This is further equal to, कैसे लिखेंगे हम इसको? 17 by 26 minus this will be written as 7 iota by 26. But we have to express it in form of a plus, बीच में plus sign चाहिए. So this will be further written as 17 by 26 plus of minus 7 by 26 into iota. This is nothing but our final answer and Z1 upon Z2. देखो हमने एक्सप्रेस कर दिया. A plus iota b या b iota. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं? a plus iota b लिखो
या a plus b iota लिखो. Either of the way we can represent. So we have expressed this division. ये जो division of two complex number था, we have expressed it in form of a plus iota b. That completes our example. ये same चीजें हमें exercise में भी करनी है. We have to carry out addition, subtraction, multiplication as well as division of complex numbers. Please note down till here first. If any doubt, you can ask. So now with this, we finish off today's lecture, students. Now next time when we meet, we will be starting the problems. Exercise से start करेंगे, but exercise wise हम इस topic को we will be doing type wise करेंगे. Don't worry, I'll explain you in the next lecture. Today we have started with a very important topic, that is nothing but complex number, and it is from paper 2. Okay, keep studying. Thank you. Also keep watching.